Welcome to the colorful world of digital design, where every interaction shapes your experience. Let's master UI/UX design. People sometimes confuse UI and UX, but UI is actually a specialized subset of UX. A great user interface creates the foundation for a positive user experience. Wow! UI combines usability and interactive design to create an emotional connection. Good UI depends on page layout, colors, typography, and interactive elements. UX designers research users, organize information, build wireframes, test ideas, and improve products. A UI/UX designer can work in startups, large companies, or even remotely. UX design never stops. Designers keep improving products based on user feedback. UI and UX work together to create successful digital products. Right, user interface and user experience are two closely related fields that focus on creating digital products such as websites, mobile applications, software, and interactive systems that are attractive, functional, and easy to use. User interface. It basically refers to the visual elements that users interact with within a digital product. May include something like say buttons that we use to say order or say enable something. Then there are icons, like say icons which enable us to know which app is for what. Like say BGMI is there. BGMI's icon is basically a player with a level 3 helmet, right? Cool. So those are basically icons. Menus is something that enables or say help us to know the categories that are there inside an app. Be it like say Amazon, where we are scrolling through Amazon, right? And like say we need kind of different kind of things over there. Like say we need phone section differently, we need clothes section differently. That is basically menu. Then there are few more things like say colors or say layout, images, what kind of images are used. Images, like let's come to images part. Like normally we say we all order food from restaurants, right? Zomato, Swiggy, and they show us good pictures, such a beautiful picture, and we see that pizza. Oh my god, this pizza is gonna be awesome, man. But when we order, it's something else. Order कुछ किया था, आ गया कुछ और. So those are basically images. Images are basically being made to people, attract people. वो actual में वही चीज हमको को नहीं मिलता है in most cases. So those are basically images to basically attract the people. So coming to the next part, which is UX. UX is basically user experience. User experience focuses on the overall experience users have while interacting with a product. It aims to make products easy to understand, efficient, accessible, enjoyable, and user-centered. Use करके क्या कैसा लगा इसको? That's what we basically want. Like say we play BGMI, like BGMI का interface ज़्यादा better होता है
or say we play Free Fire's interface is again different, like kind of like that. How the experience of the app is. It may be it may be food ordering apps, it may be shopping apps, it may be games, doesn't matter at all. Now, coming to that difference between UI and UX. UI is basically we're focusing on appearance, दिखने में कैसा लगता है. UX is basically we're focusing on the experience, use करके कैसा लगा. Like there was an ad few years back, इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे. So it's kind of like that. Coming to UI again, UI is basically visual design and UX is basically user satisfaction. Again, coming to UI, it's basically colors, buttons, typography, text कैसा है, color कौन सा वाला दिया है, and buttons का designs कैसा है. That's basically UI. And coming to UX, it's basically user research and usability. So those are some basic differences of it. Now, importance of UI UX. क्यों ये important होता है? Why do we need it? Why do companies like Google, Apple, Amazon invest heavily in UI UX? Because main important thing, our user experience directly impacts business success. अगर आप अच्छा नहीं है तो it will not run at all. Now Amazon has खाली उसके पास वो shopping ही नहीं है. It has Prime videos as well, and it does a certain couple of more apps as well. So that's basically it. So a good UI UX, अगर हम लोगों ने उसको अच्छे से डिजाइन किया, it will improve customer satisfaction, it will improve product usability, user frustration remove होता है, sales and conversions increases, and mainly building the brand loyalty. Should we use it? Should we not use it? Use करके कैसा लगता है, कैसा नहीं लगता है. Again, UI UX is not limited to shopping app या restaurant ही नहीं. Phone का UI भी होता है. Apart from phone UI, game का भी होता है. It varies from each and every section. अब gaming में अलग होगा, shopping वगैरह brands का अलग होगा. It is different. It will never be the same. अब आता हूँ उसका डिजाइन प्रोसेस. डिजाइन प्रोसेस इज समथिंग हम लोग कुछ हमें रिसर्च करना पड़ता है, एंड बेस्ड ऑन दोज रिसर्च वी डिफाइन द प्रॉब्लम कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए. बेस्ड ऑन दैट सर्टेन डिजाइन इज मेड. तो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग फर्स्ट यूएक्स आएगा ऑलवेज कमिंग टू द फर्स्ट. वो बाद में भी आएगा, बट फर्स्ट यूजर रिसर्च का काम आता है. टारगेट ऑडियंस को ढूंढना पड़ता है. लाइक से वी टारगेट जेन जीज, वी टारगेट मिलेनियल्स, वी टारगेट जेन एज, वी टारगेट दी ओल्डर पीपल. सब लोगों को टारगेट करना पड़ता है. एंड वी आस्क, इंटरव्यू लिया जाता है, एनालिसिस लिया जाता है, सर्वे भी लिया जाता है, डिफरेंट वेज. देन द प्रॉब्लम इज डिफाइंड. क्या प्रॉब्लम उनको फेस हुआ उसको डिफाइन किया जाता है. And then according to that information architecture is made. And architecture ऐसा नहीं कि architecture बोले तो ऐसा नहीं कि हम लोग बिल्डिंग बनाएंगे या something like that. Architecture, information architecture is basically creating a blueprint. जो हम लोगों ने किया, जो चीज़ हम लोगों ने रिसर्च किया उसका एक ब्लूप्रिंट निकाला जाता है. So what that blueprint is all about, that is what information architecture is. And then लास्ट में आएगा यूजर फ्लो. यूजर फ्लो होता है लाइक से वी आर मेकिंग अ स्केच ऑफ इट.
पहले क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, लास्ट में क्या आएगा। फोन का यूआई आया, किसी ने बटन को टैप किया, द ऐप ओपन्स, ऐप ओपन होने के बाद क्या गया क्या नहीं गया, everything will be there. That is what user flow is about. क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। नेक्स्ट इज वायर फ्रेमिंग। वायर फ्रेमिंग में उसको प्रॉपरली स्केच किया जाएगा स्टोरी बोर्ड की तरह। इट्स अ स्टोरी बोर्ड, अ स्टोरी बोर्ड फॉर यूआई यूएक्स। जैसे मूवी बनाने से पहले एक स्टोरी बोर्ड होता है, कौन सा शॉट पे क्या होगा, कौन सा एक्टर का डायलॉग क्या होगा, a script is made. So wireframing is basically script plus storyboarding. क्या होगा क्या आएगा क्या नहीं आएगा, each and everything. Then comes prototyping, जिसमें वो स्टोरी बोर्ड को फॉलो करके डिजाइन किया जाएगा। That is where Figma, XD and all are used. सेम उसके अंदर विजुअल डिजाइन भी आएगा, उसके अंदर टाइपोग्राफी भी आएगा। लास्ट में जब डिजाइन हो गया, डिजाइन हो जाने के बाद इट विल गो टू यूजेबिलिटी टेस्टिंग। सब यूआई यूएक्स में एक ऑप्शन रहता है फॉर टेस्टिंग द ऐप बिफोर डेवलपमेंट पे हैंड ऑफ होने से पहले। डेवलपमेंट इज समथिंग दैट जो कोडिंग वाले लोग करते हैं, इट्स नॉट आवर थिंग टू लुक एट, बट उन लोगों के पास जाने से पहले वी हैव टू टेस्ट कि ऐप काम कर रहा है नहीं कर रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बिकॉज अ डेवलपर डजंट नो, उसका डिजाइन का बारे में कुछ भी पता नहीं है, ही ओनली नोज हाउ टू कोड, वो खाली उसमें ध्यान देगा। सो डिजाइन इज समथिंग दैट वी विल डू फॉर आवरसेल्व्स। देन उसके बाद एकदम लास्ट इट विल बी प्रोडक्ट लॉन्च, इंप्रूवमेंट, कुछ हुआ तो इंप्रूवमेंट आएगा, इट विल कीप ऑन वो गोइंग, वो कभी भी खत्म नहीं होता है। द प्रोसेस इज एन एंडलेस लूप, लूप में वो चलता ही रहेगा। तो ऐसा नहीं तुमने यूआई यूएक्स में कुछ काम किया, कुछ डिजाइन किया, कुछ एक पेज किया, खत्म, टाटा बाय बाय गेट लॉस्ट, नॉट दैट। वो वापस आता ही रहेगा, इट विल कीप ऑन कमिंग बैक अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। सो दैट इज अ गुड पार्ट इन यूआई यूएक्स, वो कभी खत्म नहीं होता है। ऐसा नहीं कि इट्स एन एंडिंग प्रोसेस, वो चलता ही जाएगा। न्यू थिंग कम्स, न्यू डिजाइन विल कम, अगेन न्यू थिंग कम्स, न्यू डिजाइन विल कम। सीजन के साथ वो चेंज होता है, ऑफर्स के साथ वो चेंज होता है, फेस्टिवल्स के टाइप वो चेंज होता है। सो द चेंजेस कीप ऑन ऑकरिंग अगेन एंड अगेन। गेम हुआ तो गेम में भी चेंजेस आएगा। सो इट डिपेंड्स। कमिंग टू द डिजाइन पार्ट, UCD, जो सबसे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है इन यूआई। UCD इज यूजर सेंटर्ड डिजाइन। जो डिजाइन एक यूजर का नीड और प्रेफरेंसेस के ऊपर बेस करके बनाया जाता है। इट इज बेसिकली 5 स्टेजेस, जो है एम्फेटाइज, डिफाइन, आइडिएट, प्रोटोटाइप, टेस्ट। कैसे टाइप से वो ऐप बनाया जाएगा, व्हाट आर द प्रोसेसेस दैट आर इन्वॉल्व्ड इन इट, वो होता है डिजाइन थिंकिंग। देन वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग विल कम, दैट इज एक्सेसिबिलिटी, जिसमें डिफाइन बेसिकली होगा ensuring products are usable for everyone including people with disabilities। किसी का कुछ डिसेबिलिटी है तो वो यूज कर पाएगा नहीं कर पाएगा, दैट इज व्हाट मैटर्स ऑन इट। देन है विजुअल हायरार्की, कंसिस्टेंसी एंड फीडबैक एंड सम प्रिंसिपल्स आएगा उसके बाद, which we will look into it more। जो आएगा इन मॉड्यूल्स एंड कॉन्सेप्ट। सो कमिंग टू मॉड्यूल्स एंड कॉन्सेप्ट, आपको क्या क्या सिखाया जाएगा इसमें, दैट इज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंट्रोडक्शन टू यूआई यूएक्स।
क्यों आता है यूआई यूएक्स, उसका बेसिक्स क्या है, उसका हिस्ट्री क्या है, एंड उसका डिजाइन प्रिंसिपल्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। अगर आइडिया ही नहीं है क्या बना रहे, क्यों बना रहे, कौन सा मेथड से बना रहे, देयर इज नो पॉइंट इन गोइंग टू इट। डिजाइन प्रिंसिपल सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगा इसमें। देन कम्स यूजर रिसर्च, उसमें सर्वे कैसे होगा, इंटरव्यू कैसे होगा, यूजर पर्सोना क्या होगा, कॉम्पिटिटर एनालिसिस क्या होगा। अमेजोन है, अमेजोन का कॉम्पिटिटर फ्लिपकार्ट है, लाइक दैट। देन आएगा इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर, जिसमें वी विल क्रिएट एन आर्किटेक्चर, उसका नेविगेशन क्या होगा, उसका साइट मैप क्या होगा, उसका स्ट्रक्चरिंग क्या होगा। देन कम्स मॉड्यूल 4, यूजर फ्लो जर्नी मैपिंग। Journey maps is something that is done by observing a certain user. वो दिन में क्या करता है, how the app is used, how much that the app is used, वो होता है journey map. It's basically a part of research process. Then उसका through, उसका against एक यूजर फ्लो बनाया जाता है। यूजर फ्लो इज बेसिकली कहाँ से कौन सा पार्ट में क्या जाएगा। एज आई एक्सप्लेन बिफोर, होम है, होम से क्या क्या जाएगा, कौन सा पार्ट आएगा, विच पार्ट विल कम, विच पार्ट वोंट कम, दैट इज अ यूजर फ्लो। नेक्स्ट कमिंग टू वायर फ्रेमिंग। वायर फ्रेमिंग जैसे कि बोला पहले भी, इट्स अ स्केच बोर्ड या से मूड बोर्ड कि कौन सा क्या कैसा एक्शंस रहेगा। यूआई यूएक्स डजंट हैव डायलॉग, एक्टर का डायलॉग वगैरह नहीं होता, तो उसमें एक्शंस वगैरह आएगा, कौन सा एक्शन यूज होगा, कौन सा एक्शन यूज नहीं होगा, दैट इज वायर फ्रेमिंग। देन कम्स प्रोटोटाइपिंग। प्रोटोटाइपिंग एंड विजुअल यूआई डिजाइन दोनों एक साथ आएगा। इट्स बेसिकली हाउ वी विल डिजाइन, क्या क्या डिजाइन सिस्टम्स यूज होगा। अगेन इसमें थोड़ा सा क्लासिफिकेशन आएगा। फॉर अ शॉपिंग ऐप इट विल बी डिफरेंट, फॉर अ फूड ऐप इट विल बी डिफरेंट, मेडिकल ऐप डिफरेंट, गेमिंग एकदम डिफरेंट, इट विल बी डिफरेंट। सो दैट इज विजुअल डिजाइन। देन कम्स डिजाइन सिस्टम्स। डिजाइन सिस्टम्स होता है थोड़ा सा एडवांस काइंड ऑफ डिजाइनिंग, जिसमें हम लोग easier to use is method यूज करेंगे, यूज किया जाता है। समथिंग विच कैन बी ड्रैग एंड ड्रॉप इजीली, क्लिक करने से चेंज हो जाता है, लाइक दैट। लाइक हाउ वी आर सिलेक्टिंग समथिंग, प्रेस चूज ऑप्शन ए ऑप्शन बी, वैसा टाइप का जो आता है, दैट इज दोज कम इनटू डिजाइन सिस्टम्स। देन विल कम द यूजेबिलिटी टेस्टिंग। यूजेबिलिटी टेस्टिंग बेसिकली होता है प्रोटोटाइप करना। वी रन द ऐप and see वो कैसा टाइप से चाह रहा है, which is basically done in 3 methods. One is user testing, one is A and B testing, and third one is heuristic testing और से evaluation. User testing जो यूजर बना रहे हैं वो खुद से टेस्टिंग करता है। A/B testing is something that is done to that is given to a different party, and heuristic evaluation is something completely different. उसका एक प्रिंसिपल है, डिफरेंट प्रिंसिपल इज देयर, वो उसके हिसाब से आएगा। देन विल कम मोबाइल एंड रेस्पॉन्सिव डिजाइन एंड एक्सेसिबिलिटी एंड इंक्लूसिव डिजाइन। अगेन दोज आर 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रिंसिपल्स। एक होगा देयर विल बी डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिजाइन्स में, एक मोबाइल में भी ऐप का डिजाइन होता है, एक पीसी में भी डिजाइन ऐप डिजाइन होता है, बट बोथ वर्क डिफरेंटली। जोमेटो पीसी में भी खुलेगा, मोबाइल में भी खुलेगा, बट क्रोम का उसका इंटरफेस अलग है, ऐप का इंटरफेस उसका थोड़ा सा अलग है, काइंड ऑफ डिफरेंट वंस। आज पर टूल्स इसमें विजन आएगा, विजन, फिग्मा, मैक्सडी, ये सब आपको सिखाया जाएगा वंस विच आर यूज प्रोफेशनल। एंड उसके साथ थोड़ा सा एआई को हम लोग कैसे हेल्प लेते हैं, दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट विल बी टॉप।
because AI is something that is fast coming into the industry. आ रहा है, आएगा, will keep on coming. So better to be a hybrid artist. Better to know how to use it. कैसे उसका help लिया जाए. Coming to career opportunities, there are different kinds of career opportunities in it, like UI designer, UX designer. कोई product designer भी बनता है, visual designer भी बन जाता है, design system designer, service designer, like that. Every day, we interact with digital products without even thinking about them. From the moment we check our phones in the morning to ordering food or booking a cab, technology has become part of our daily routine. But have you ever stopped to think about what makes these digital products easy to use? The answer lies in two important design concepts: user interface, commonly known as UI, and user experience. The answer lies in good design. Behind every successful digital product, there is careful planning that focuses on both appearance and user experience. This is where two important concepts come into the picture: user interface, commonly known as UI, and user experience, known as UX. Although people often use these terms together, they are not exactly the same. UI and UX have different responsibilities, but they work closely together to create great digital products. Let's start with UI. UI stands for user interface. It includes everything users can actually see and interact with on a digital product. A good UI creates a positive first impression. It makes a product look attractive, organized, and easy to understand. UI and UX designers are needed across almost every industry, from e-commerce and banking to healthcare. Education, travel, businesses are constantly investing in the demand for skilled UI and UX professionals continues to grow. As more businesses move towards digital platforms, a UI/UX journey starts with understanding users and solving real-world problems through design thinking. Next, ideas are transformed into user flows, wireframes, and interactive prototypes. UI designers then add colors, typography, icons, components, and visual styles to create engaging digital experiences. Professional designers use modern tools to collaborate, prototype, and bring ideas to life. After learning UI/UX, many career opportunities open up. Almost every industry needs UI/UX designers. As technology grows, the demand for UI/UX designers continues to increase.